करके ਅਸੀਂ अगर बाहर देखिए तो अपॉइंटमेंट सिस्टम वर्सेस वॉक इन सो बाहर कोई लाइनअप नहीं हैगी और जिन्ने भी लोग हैं वो अंदर टोकन दे के अंदर चले गए हैं. The best is to come in as walk-in. There is to be as much application processed around this time and everyone needs to get accommodated. Brampton Center is almost 500 applicants we are serving in appointments. Miss ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਂਚ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਅਸ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਅਗੇਨ ਟੁਮਾਰੋ. ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਂਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਹੈ ਗਿਲਿੰਗਮ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ अपॉइंटमेंट सिस्टम वर्सेस वॉक इन सो बाहर कोई लाइनअप नहीं हैगी और जिन्ने भी लोग हैं वो अंदर टोकन दे के अंदर चले गए हैं जा चुके हैं. बाहर लाइनअप सानू देख नहीं रही. बहुत सर्विसेज च इंप्रूवमेंट कर ली गई है BLS की तरफ तो. अपॉइंटमेंट सिस्टम भी है तुसी अपॉइंटमेंट लो अपॉइंटमेंट ते आओ या वॉक इन आंदे हो. इत्थे कोई वॉक इन वाला भी बाहर नहीं है. जद असी आए सीगे इत्थे 7-8 लोग बाहर सीगे लेकिन सडनली उन्होंने जिद्दां टोकन दे के अपॉइंटमेंट्स और वॉक इन सारे अंदर वेट कर रहे हैं और अंदर काफ़ी काउंटर्स है जिथे सर्विसेज दित्तियां जा रही हैं. इत्थे एक पॉइंट मैंशन करना है जिथे BLS नूं असी हमेशा अकाउंटेबल रखिया उत्थे साडी भी इंडिविजुअल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असी अपने फॉर्म्स के अंदर कोई मिसटेक ना करिए. BLS ने वो कंप्लेंट्स नूं रेक्टिफाई करन लई जिहड़ी सर्विसेज यूज इंट्रोड्यूस कीतियां सीगियां प्रीमियम लॉन्च दी विद $100 फीस वो मैंडेटरी नहीं है. लेकिन अगर तुसी दूरों आने हो थोड़ी एप्लीकेशन च मिसटेक है थोड़ी पिक्चर के अंदर मिसटेक है थोड़े नाम च मिसटेक है तुसी एड्रैस नहीं पूरा प्रॉपर पाया या होर किसी टाइप की मिसटेक है वो साडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ਉਹਦੇ ਚ BLS ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ क्योंकि ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮ ਡਿਊਲੀ ਫਿਲਡ ਕਰੀਏ. अगर मिसटेक करते हैं और असी वापस नहीं जाना दोबारा असी नहीं आना तो सर्विस है प्रीमियम लॉन्च दी विद $100 फीस. काफ़ी लोगों ने इन्हू एप्रीशिएट किया कि आ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. असी गलबात करते हैं BLS के मैनेजमेंट नाल और कुछ लोगों नाल भी उन्होंने एक्सपीरियंस किद्दां रिहा दे उपर. BLS के मैनेजमेंट साडे नाल है गलबात करांगे कि अपॉइंटमेंट्स अगर नहीं मिलदियां की वॉक इन आ सकते हैं क्योंकि असी जिद्दां हुणी गलबात की है कि लाइनअप्स खत्म हो गई हैं लाइनअप्स नहीं है. सो थानू अगर अपॉइंटमेंट च मुश्किल आती है तो तुसी वॉक इन की आ सकते हो. Anirban ji, can you let us know that we have seen that there is no lineup here. So Right. can people they come walk in also and they don't have to stand in big queues here? Yes, of course. See, we have both walk-in without appointments and walk-in with appointments. Now, we always keep suggesting that don't wait for appointments. We open up appointments, but what happens is these appointments, as we have repeatedly said, that it gets misused by those agency network. It gets blocked. It gets eaten up. So, while we open not only just the month's appointment, we also open during the day, during the week, we open appointments that's all get blocked. So the best is to come in as walk-in. Historically, which I shared last time when we had started in around 2013, it used to be only walk-in without appointments. There is to be as much application processed around this time and everyone needs to get accommodated. And even today, everyone gets accommodated if you come in as walk-in. So please come in as walk-in. If you're not getting appointments, definitely you'll get appointments. But as I said, that there are certain challenges with getting the appointments that gets blocked by this, this agency cartel. So yes. So question is like, are you working to fix that also so that agents outside third party, Right. they should not be able to block the appointments? Any mechanism is BLS working to Yes. hold them accountable? Yes, we have put in a lot of checks. We have been in discussion with the mission and the post. We have put in checks like passport number, mobile phone number. Each mobile phone can be used for family applications of only about 4 member. The passport number, mobile number can be used for a week's time only. There's a OTP which will come on your mobile phone, which you need to submit to get your appointment confirmation page. So all these checks we have put in. We are putting in more checks in the coming days. But that's just to bring down the percentage of appointments getting misused, getting blocked from being available. So that will increase. But having said that, the best is that you come in as walk-in
and except for those very unusual days when maybe there's a huge turn up of people, otherwise everyone gets accommodated by the time we close. There's not been a single day that people has been asked to go and say that we are capacitized or we cannot take any more applicants, except for those unusual days. Okay. Yes. ओके सो आरुषि जी, अगर आप बताएं सेम क्वेश्चन की वॉक-इन्स अगर आप हमें हिंदी में बता दें, वॉक-इन वर्सेस अपॉइंटमेंट्स. सो वॉक-इन पे एकोमोडेट किया जा रहा है सबको, लाइनअप्स नहीं दिख रही है बड़ी. मैं एप्लीकेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगी कि अपॉइंटमेंट्स जो हम पर डे यहाँ पे सर्व कर रहे हैं विद इन ब्रैम्पटन सेंटर इज़ ऑलमोस्ट 500 एप्लीकेंट्स वी आर सर्विंग इन अपॉइंटमेंट्स. वॉक इन के लिए ऐसा है कि सुबह जब 7-8 बजे जब आप सेंटर में आते हैं मॉर्निंग टाइम में, ऐसा लग सकता है कि क्यू बहुत लंबी है, यहाँ तो नंबर नहीं आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स अपॉइंटमेंट के साथ खड़े हैं जो जैसे ही सेंटर ओपन होता है 8 बजे हमारे अंदर कम से कम 16 से 18 काउंटर्स चल रहे हैं जो विद इन 1 आवर और 2 आवर्स एकोमोडेट कर देते हैं एप्लीकेंट्स को. और आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर जो क्यू है वो पूरी फिल्टर हो चुकी है, एकोमोडेट हो चुके हैं. और वॉक इन एप्लीकेंट्स आई वुड से बाय 12 o'clock 11 o'clock दे हैव बीन ऑल एकोमोडेटेड, जैसे कि आज आपने देखा यहाँ पे सेंटर के बाहर भी. तो प्लीज़ वॉक इन, अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी मिल रही है आपको, प्लीज़ अपॉइंटमेंट वॉक इन के साथ आएँ आप, बिना अपॉइंटमेंट के you will be accommodated. ठीक है. सो BLS ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ. ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ BLS ਸੈਂਟਰ ਫॉर योर ਸਰਵਿਸਿਜ਼. ਸੋ ਵਾਕ ਇਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਨਿਰਬਾਨ ਜੀ, Just to add on yes. to that we would insist on walk-in, and as she said that within an hour's time, the entire queue up. What she meant is within an hour is not for 1 or 2 applicants waiting time. The waiting time would hardly be about 10-15 minutes. Within an hour's time, the entire lineup that you get to see at the start of the business hours, when people lined up, maybe about 70, 80 or 60 people, they all get accommodated within 1 to 2 hours time. Everyone's in and they've been served, and the fresh line takes over. Okay. That's one, and that's not just for Brampton Centre. Brampton Centre does the highest volume of application, followed by Toronto, Surrey, Mississauga, but it's for all centres. This applies for Pan Canada, all BLS centres. Okay. Yeah. So there is a myth also in the public that we have to come to BLS multiple times. What you'll say on that? Because we also talk to some of the individual applicants. When they make a mistake, now you have another service which is a premium launch, reasonable fee, $100. But why they have to come to multiple times, or they don't have to come? So, but this is a myth in the public. As you have actually answered it, that this is a myth. As a statistics, 70% of the applications that come, walk-in applicants, when they come, it comes with error, whether that's ignorance or whatever, that because there's a very clearly defined checklist on the BLS website, on the consulate website, very clearly mentioned. So if they follow that, it's all good, because we do not have any decisioning authority at BLS. We only accept applications on behalf of the consulate as per their guidelines, their checklist. Once we accept the application, we just put it on the system, capture it on the system, and hand it over to the consulate for their decisioning. A lot of applicants says that if there is error, why don't you correct it? We don't have any correction authority. We cannot override. Then we become the authority. We are not. Yes. But what we can do is we have the premium lounge facility where we can assist an applicant end to end, that you come, we will do your applications, we will assist you, we will guide you on if you have any questions. From there, to fill up of your applications, uploading of your documents on the ministry platform, ensure that the application gets submitted, and at the same time the courier drop off of the document, the photographs, photocopies, that's all included there, and that's only $100. Yes. Right. But many people say that small mistakes, for Right. the small mistake, Right. For them it might be small, but for the ministry or for BLS that might not be small. Right. So they say for small mistake BLS send us back. What you'll say on the small mistake? This is exactly what I guess Arushi had addressed during a previous interview, that what looks
small or what is small as per, say, your definition, may not be small as per the consulate requirement, as per the checklist. So you might think that is small, but that could be a very important, and there's no way that we can correct or override it. So if that is taken and if it's submitted to the consulate, that will come back returned. And of course, the fee entered on the system doesn't get refunded. So what's the point? The time gets wasted, money gets wasted. So that's about the errors. So the best, so one, follow the checklist. Two, even if there's any issue, any challenge, we are now blessed that we have this approved by the government, this assisted service, Premium Launch, where you are assisted till your application is submitted on the system. Anything that Arushi wants to add? Yes, Arushi ji, if you want to say on this, the small mistake, लोगों को वापस जाना पड़ता है. So we talked to the people, they said छोटी मिस्टेक कोई नहीं होती, बिकॉज मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती. तो आप क्या कहोगे छोटी मिस्टेक्स के ऊपर? एक्चुअली जो छोटी मिस्टेक्स लग रही हैं, द थिंग इज़ दैट कि वी आर नॉट अलाउड टू डू एनी मैनुअल चेंजेस ऑन द एप्लीकेशन. तो इफ़ यू थिंक कि एक छोटी मिस्टेक है, स्पेलिंग एरर है, एड्रेस में ये मिसिंग है, अगर आपको लगता है कि हम मैनुअली उसको चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्सुलेट. सो बेसिकली हमको भी दोबारा ही एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन अगर चली भी गई, एक्सेप्ट हो भी गई BLS में, तो आगे जाके वो रिजेक्ट हो जाएगी और इट विल कम बैक एंड फी इज़ ऑल्सो नॉन रिफंडेबल. ओके. तो दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारे पास प्रीमियम लॉन्च सर्विस है. आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ अपने साथ, जो चेकलिस्ट में लिखे हुए हैं, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू. आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, हम आपका फॉर्म फिल करेंगे. प्रीमियम लॉन्च सर्विस आप ले सकते हैं डायरेक्टली एट द डोर. ठीक है. अब मेरा सवाल है कि जो एक मेल इन एप्लीकेशन आती है और एक इन पर्सन एप्लीकेशन है, व्हाट यू से ऑन दिस मेल इन एंड इन पर्सन एप्लीकेशंस? Mail in is by postal. Yes, by postal. And in person is when you are coming as walk-in with appointment or without appointment. Postal application में आप by post भेज रहे हैं, उसमें ये है कि अगर errors हैं या कोई document missing है, तो आपकी application जो है हम check करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम reasons लिख कर देंगे, but वो वापस चली जाएगी. और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि applicant सामने खड़ा है तो हम signature करवा लें, photograph missing है तो हम ठीक करा लें. But जब आप walk-in में आ रहे हैं, we have all the authority to make corrections on your form. हम आपको बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है. So I would say walk-in service is better than the postal service. Okay. You want to add something? Again, to more clear on that, we cannot make corrections on your form, but we can guide you to make by yourself corrections on the form. Yeah. So which can be in when you are come as a walk-in as in person. So that's again, as we had shared numbers during our last conversation. Yes. So pre-COVID, the postal application used to be only about 15%. And now it's a large people are sending postal applications, and it's actually not people's choice or the applicant's choice, to be very true. What happens is they'll line up at the agents because the agents say that, oh, we have tie up with the BLS or with the consulate. Even if you're not getting appointment, aap hame de do applications, you will see that it has gone to the BLS tomorrow. And what they do is they just send it by courier. So BLS has no tie-up with any third-party agents? We cannot have any tie-up. We have no reason to have any tie-up. Yeah. Because if you have to submit the Indian consulate document, you have to come to BLS. You cannot go to any other company. So why would you have any tie-up? So now, so what they do is they just send it by courier. The document comes here and people feels, oh right, these people have tie-up with BLS or the consulate. It is just reached there the next day. So more and people, they get influenced by it and send it. But in reality, what happens is this agents, they just send it by courier to BLS, and that comes with error. And then as Marush explained, that what happens, 70% comes with error, 70 to 75%. As much we could, in discussion with the consulate, take or accommodate. But largely that goes, returned because we ask for the documents from the applicants, but then they can't interpret it, over email, or when the letter goes that these are the shortcomings in the application, they can't interpret. So what happens? It gets returned to the applicants, and it's a loss of time and money for them. Okay. So don't send by postal. Come in as walk-in, and as yes, we are in the world of modernization, but touch and fill still, exist and still strong in, some segment of the business. So come as touch and fill, submit at the counter. There's any issue, shortcomings, the officers can discuss with the consulate over the phone. They can give, any substitution, the suggestion of whatever documents which we can tell to the applicant. We can take it, or if needed be, they can avail the premium launch service and get it. But anyone coming as walk-in will get served
their end result of application getting processed on the system will happen at BLS, and they can go back home. So you agree that from previous years BLS has improved its service a lot, started a new service, so that helped the public, the community, and the BLS also. Absolutely, with the extension of the contract, with the certain guidelines and certain the requirements which have worked out very good for the people, for the applicants. That's starting from the area, the capacity, to these things like the services, the assisted services, and etc. That really had helped. Thank you. Right. Thank you Anirban ji. Thank you very Right. much. Thank you. Thank you Arish ji. Thank you. So ਆ ਸੀਗੇ BLS ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਅਪ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਬਲੌਕਡ ਬਾਈ ਦ ਏਜੰਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਆਓ, ਔਰ ਵਾਕ ਇਨ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਾਈਨਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ 5-7 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਕ ਇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੌਂਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ $100 ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੌਂਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟਸ। ਮੇਲ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਓ। ਸੋ BLS ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लाइन अच्छा है कि अभी लाइन बहुत ही नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ कोई माइनर फॉर्म एप्लीकेशन मिस्टेक हो तो दे डू मोर एंड मोर चार्जेस। आई थिंक वो चार्जेस थोड़े कम होने चाहिए। बाकी तो सारी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। यू नो आवर ड्यूटी दैट वी डू नॉट हैव एनी मिस्टेक। अगर हमने गलती किया, लेकिन गलती की सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। $100 इज़ टू मच। अप्रिशिएट द सर्विस। सर्विस बहुत ही अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि सर्विस अच्छी नहीं है, सिर्फ थोड़े चार्ज थोड़े अगर कम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादा हाई चार्जेस। हाँ $100 अब हाँ अब मैं आया हूँ, मुझे 2 फॉर्म है, अब $200, so it's too much. Yeah, I see a few people yelling inside, but my experience is that it's not that bad. Like whenever we follow the website, they said clear things, and for me it's okay. So, yeah. And my last 2 weeks ago, my wife did the same. We did the passport surrender thing. Application process, many said it is complicated, but it is not, like usual thing. And we came, we booked the appointment, came here on time, finished everything. My wife did it in 10 minutes. I got 10-15 minutes delay, but that's fine. I took the appointment online and came. So easy, convenient? Yeah, very convenient. Okay. Nothing to say. But still I see many people yelling inside, but maybe their fault. ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਦੱਸਤਾ, ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਂਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ BLS ਆਏ ਸੀਗੇ ਫॉर ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ OCI। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਸਰਵਿਸ ਹੀਅਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਨ ਟੂਡੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਅਗੇਨ ਫॉर द सेम सर्विस। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਂਚ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ which is benefit to us that we don't have to come again tomorrow or do again all the steps, and then they are giving us for some bucks, and then now we can do it all at the same time। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਨ ਫਰਮ 5 AM, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਂਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।